Okay, good evening. So, just in case अगर बीच में इंटरनेट स्लो हो जाएगा या ठीक से नहीं चलेगा, then you should join YouTube link which I have already shared. Okay. So algebra में हमने क्या क्या किया algebra में? Remember? Algebra में हाँ, एक तो हमने किया using coordinates for solving linear equations. हम algebra में तो linear equations कर रहे थे. Linear equations, and we were trying to solve those linear equations. Sir, I can't see the screen. Okay, I'll share the screen. So linear equation, we will just quickly recap. Linear equation mein what did we do? Linear equation means, what do you mean by linear equation? Yes, tell me. One. It has. What Sir, it has the power one. what has power 1? Sir, in linear equation. No, but we power 1, what do you mean by power 1? The variable has power 1. Okay. Variable has to, for example, I say 2x plus 3 is equal to 0. The variable x has power 1. So it becomes a linear equation. So this is a linear equation, and this portion from here to here, this portion is linear polynomial. If I rub this, for example, if I rub this, now it is only a linear. Now this is a linear polynomial, isn't it? अब ये क्या बन गया? Linear polynomial. Polynomial because it has more than one term. This is one term, this is another term. So it's a polynomial, and because the power of the variable is 1, therefore what happens? Therefore it is called linear polynomial. But if I just write 2x plus 3 is equal to 0, now it is a linear equation because I equated left hand side with the right hand side. So it becomes a linear equation. ठीक है? Yes, sir. Now after that linear equation, we did pair of linear equation, if you remember. एक तो हमने linear equation किया, उसके बाद हमने क्या किया? हमने किया था pair of linear equations. Linear, now I have to write linear equations because it is more than, it is a pair, 2. And this pair of linear equation is also called system of equation. System. So I can say system of linear equations. So this pair is also called system of linear equations. ठीक है? Now this system of linear equation,
we can solve this linear equation or system of equations by two methods. हमने सीखा था we can solve these equations. We can solve the pair of linear equation by algebra using algebraic method. By using algebra, or we can say by using algebraic method. Okay. We can also, then we also did solving this linear equation by graph, by coordinate, using coordinate geometry, or by graphs, or by graphical method. So if you have missed any of the classes, you should go to YouTube channel and select recorded online classes, and then you can see these recorded online classes. Okay. Yes, sir. So this was about linear equation and pair of linear equation. Now today we will try to understand quadratic equation. What we mean by quadratic equations. Linear equation, the degree of polynomial or the highest degree of variable is 1. In quadratic equation, the highest degree is 2. Okay? Now for example, if we see this equation, this is a quadratic equation, because I can write this as 3x square minus 5 equal to 0. And if you see यहाँ पे, what is the highest power of variable? What is the degree of this polynomial? This is a polynomial. This complete is an equation. So 3x square minus 5 is this is a quadratic polynomial. Okay. Similarly, if you see this equation, in this also, this x square plus 2x plus 3, this is a quadratic polynomial. Okay. Now, if we see this third one, x cube plus 1 is equal to 3x square. This is a cubic, because I can write this as x cube minus 3x square plus 1 equal to 0. इस 3x square को मैंने यहाँ ट्रांसपोज किया, ये माइनस बन गया, and this is same as this equation. I can write this as this equation. But if you see this portion, left hand side, this is now it is not a quadratic polynomial. It is cubic, because its highest power is 3. So इस चीज का ध्यान रखना है. So this is quadratic equation, this is quadratic equation, this is not quadratic equation. So this was about quadratic equation. Now let us see the standard form of quadratic equation. जैसे suppose ये एक quadratic equation है, we can write a standard form of quadratic equation. What is the standard form of quadratic equation? It is ax square plus bx plus c. Standard यानी कि एक, now we can replace abc are इसमें लिखा हुआ है. In this standard form, a is greater than 0. That means it cannot be 0, because if you make a 0, ये तो cancel हो जाएगा. Then it will not remain a quadratic equation. फिर तो ये bx plus c हो गया, and bx plus c is a अगर b और c कांस्टेंट नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 2,
then it becomes 2x and c is 3, then this becomes a linear equation. So first condition क्या है? That a has to be more than 0, and then मतलब a cannot be equal to 0, and a, b, c are constants and x is a variable. So ये जो standard form है, इसमें a, b and c they are constant numbers, and variable कौन सा है? This x. So this is called standard form of linear equation. इसी तरीके अगर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर का क्या होगा? लीनियर का होगा ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, जिसमें ए एंड बी आर कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल. इफ वी वॉच इट केयरफुली वी कैन सी, हम इसको अगर z प्लस 1 और z प्लस 2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है. पहले हम z को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वी विल डिस्ट्रीब्यूट z, सो दिस बिकम्स z स्क्वायर, this becomes 2z, then this becomes 1z. 2z and 1z is 3z, and 1 into 2 is 2. So left hand side क्या बन जाएगा? When we multiply these two brackets, it will be z square plus 3z plus 2. और right side में we will get 3z plus 1. फिर ये 3z को मैंने ट्रांसपोज किया, प्लस 1 को भी ट्रांसपोज किया, I will get this equation. और इसमें 3z, positive 3z minus 3z get cancelled, and 2 minus 1 is 1, so z square plus 1 is equal to 0. Now ये जो equation था, now I have reduced this equation into this equation. This is same basically. अगर इस equation को, now again it is a quadratic equation. Now suppose if someone says, okay, write this equation in a standard form. Standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0. So z square, अब आप इसको ध्यान से देखो, z square ये इक्वेशन है, I have to write this in standard form. So what I'll do, z square means 1 into z square, so my a is 1. ये जो 1 है which does not have any variable, इसको मैंने c बना दिया, so c is 1. और जो मेरा bx था स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैंने 0 z कर दिया, 0 मल्टीप्लाइड बाई z इज 0. सो दिस इज माय, आई हैव रिटन this equation in the standard form, so this is the standard form. So ऐसे भी questions आ सकते हैं, you will be given an equation and you have to write the standard form. ठीक है, जैसे ये equation दिया आपको और आपको बोला write this equation in standard form. ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे अभी, एक्सरसाइजेस दूंगा मैं. यू विल हैव टू राइट those equation in standard form. Standard form is ax square plus bx plus c is equal to 0. इस फॉर्म में आपको लिखना है, ओके.
So एक तो इस टाइप की exercises होंगी. You will be given different equations and you have to write them in standard form. Okay, is it clear? Now let us see if we have to solve the quadratic equation solution. So for example, now you have to solve quadratic equation. For example, ये एक equation दिया है, ठीक है? अभी we had done two methods. One was the factor method. अब देखो factorization का जो हमने factorization किया था, if you remember, factorization कैसे किया था हमने? Do you remember? Sir, by drawing that Factorization. sir, like how we used to draw that LCM like that only we have to draw that and we have to write the number and we have to factorize it. Now for example, factorize तो हो गया number का, but you have to factorization of polynomial. ये हमने किया था. If you don't remember, इसका वीडियो देखना. This we have already done. Factorization of polynomial. Factorization of number नहीं कह रहा हूँ. अगर मैं आपको कहूँगा okay, factorize 15, then you can say 15 is equal to 5 multiplied by 3. So you have factorized. These are two factors. Factorize means you have to find the factors. So 5 and 3 are factors, so you have factorized 15. But I am not saying factorize a number. I am saying factorize a polynomial. Do you remember? How do you factorize a polynomial? We had done few methods. One was by splitting middle term, if you remember. Splitting middle term. And the other was by using algebraic identities. Algebraic identities याद है? Can you tell me some identities? बताओ. Do you remember? Polynomial, no? For polynomial. हाँ. For factorizing of polynomial. Huh? Factorization of polynomial. For factorization of polynomial, we have to set this algebraic identities. So we had done some factorization of polynomial using splitting middle term and by using algebraic identities. Okay, if I ask you, can you tell me some algebraic identities? Tell me some algebraic. Sir, for this polynomial, no? No, for just tell me some algebraic identity. Sir, a plus b square is equal to a square plus 2ab plus b. Very good. Yeah. So a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. So this is first algebraic identity.
इसमें if you watch it carefully, ये जो है this is basically what? This is a polynomial. Right hand side is a polynomial because it has many terms. It has 3 terms. It has 3 terms, so it is a polynomial. And this polynomial you can write it in this form: a plus b whole square. And a plus b whole square means what? It means a plus b multiplied by a plus b, है ना? Like for example, if you say x square is x multiplied by x. इसी तरीके से a plus b whole square is a plus b multiplied by a plus b. So that means ये जो polynomial था, which one? This one. This polynomial, you have now written it as a plus b into a plus b. When you say multiplied, that means you are factorizing it. So in a way, you have factorized this polynomial into this form. So this is by using algebraic identity. Okay. Now, then we also did by using splitting middle term. Splitting middle term याद है? Do you remember splitting middle term? Splitting middle term was that suppose it was suppose 7x square plus 8x plus plus 1. Now suppose this is your polynomial. Okay. And I say okay, factorize. मैं अगर आपको लिखता हूँ factorize this polynomial. So हमने क्या सीखा था? By splitting method, splitting middle term ये वाला है. I can split it into 2 parts. और उसमें मेथड में क्या था कि हम इसको पहले let me write in the standard form. So this is standard form is what? Standard form is ax square plus bx plus c. ठीक है? So what we do, we multiplied a and c, which is ac, and then we find the factors of ac. So यहाँ a क्या है 7, c है 1, 7 into 1 is 7. Now I'll find the factors of 7. अब 7 तो actually already prime number है, so it has only one pair of factors, 7 multiplied by 1. So if suppose there are factors, multiple pairs, I will select only that pair जिसको add करके मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करूं. जैसे 7 और 1 को मैं 8x को I can split as I can write 7x plus 1x. ठीक है? So this is by splitting the middle term. अभी हम देखते हैं इसकी. Let me show you some examples. So coming back to this, today's topic is standard. First we saw the standard form of quadratic equation. उसके बाद हमने क्या किया?
now we want to solve quadratic equation. Solution, we have to find the solution of quadratic equations, and for that we will be using two methods. One is your factor method and other is using quadratic formula. First, let us see the factor method. Now if we see this equation, 6x square plus 7x minus 3, इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस डू स्प्लिट मेथड, स्प्लिटिंग मेथड. स्प्लिटिंग मेथड में क्या करते हैं हम, यहां पे देखो, यहां लिखा है, यू कैन राइट, if this is your standard formula, standard form, first of all we multiply a and c, the first constant with the third constant which does not have any variable. So we multiply AC and then find factors of AC, and then we select that factor which on addition gives you the middle term which is your B. अब इस एग्जाम्पल में देखते हैं. So AC क्या है, A is 6, C is 3, so 6 into 3 is 18, so this is my AC. AC is 18. Now 18 can have these factors, like 9 multiplied by 2 is also factors, 6 multiplied by 3 is also pair of factor. Now which one should I select? If I add 6 and 3, can I get the middle term which is my 7? I cannot get. 6 plus 3 को क्या कर सकता हूं, I can make 6 plus 3 equal to 9, or I can make positive 6 plus negative 3 as positive 3, negative 6 plus positive 3 is negative 3, but I am not getting 7, I want to get the middle term. Therefore I will not use this, इसको मैं use नहीं करूंगा. ये जो पेयर है फैक्टर्स का, इस पे फोकस करते हैं. अगर 9 plus negative 2, if I add these two, I will get 7, positive 7, that is what I want. यहां पे क्या है, positive 7x. So मैंने क्या किया, 7x को I am using these two numbers, इसको split किया. 7x I can write as positive 9x and negative 2x. बाकी मैंने वैसे का वैसे लिखा, 6x square और negative 3. So this equation I can write in this form. Now in this I will use the common factors. First two term का common factor is 3x, and on dividing, और I keep 3x बाहर, ब्रैकेट के बाहर, अंदर मेरे को मिलेगा 2x plus 3. फिर यहाँ पे मैं कॉमन क्या लूंगा, negative 1, so that मेरे को अंदर पॉजिटिव मिलेगा. So negative 2x, if I divide by negative 1, I'll get 2x. Negative 3 divided by negative 1, I'll get positive 3. So मेरा एम क्या है कि ये एक कॉमन मिले मेरे को. Now 2x plus 3, if I keep common, बाकी क्या मिला, 3x minus 1. Now if you watch carefully, ये जो इक्वेशन था हमारे पास, which was a quadratic equation, इसको मैंने यूज किया स्प्लिटिंग मेथड, और मैंने इसको कन्वर्ट किया into two factors. These are basically factors now. So I can, हमने suppose मैं अगर मैं ऐसा आपको क्वेश्चन देता, if I suppose I write factorize
factorize 6x square plus 7x minus 3 is equal to 0. Now this is a polynomial and I am saying you factorize this. तो ये हमने factorization of polynomials हमने ये टॉपिक पहले कर लिया है, उसको रिवाइज कर सकते हो आप, उसमें कुछ ट्यूटोरियल्स भी हैं और कुछ रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस भी हैं. एंड यू कैन यूज स्प्लिटिंग मेथड. सो स्प्लिटिंग मेथड से हमने इसको फैक्टराइज क्या किया, ये वाला. सो इसके फैक्टर्स क्या मिले, 2x plus 3 and the other factor is 3x minus 1. सो ये जो अब यहां इक्वेशन नहीं है, let me rub this, not equal to 0. I'm giving you only polynomial. So I'm saying, okay, you factorize this polynomial. So you have factorized. लेकिन अब हमारे को इसका solution निकालना है. We have to find the solution of this polynomial. ये वाला. तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसके फैक्टर्स निकाले लेफ्ट साइड के, एंड राइट साइड में 0 है, सो वी हैव इक्वेटेड इट इक्वल टू 0. अब जब हमने फैक्टराइज कर लिया, अब हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है, और उनका प्रोडक्ट, उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 आना चाहिए. सो उसका क्या मीनिंग है, उसका मीनिंग है वी विल हैव टू सॉल्यूशन. या तो ये, if this, because anything multiplied by 0 is 0, so that means either this is 0, या तो 2x plus 3 0 होगा, या 3x minus 1 will be 0, because only then it will be, the product will become 0 if this is 0 or this is 0. तो हम दोनों कंडीशंस को देख लेते हैं, दोनों कंडीशंस में if लगाते हैं. फर्स्ट कंडीशन, if 2x plus 3 is 0, तो इसको यू सॉल्व दिस, x इज इक्वल टू, ये 3 यहां गया, -3 एंड देन डिवाइडेड बाई 2. सो if 2x plus 3 is equal to 0, x will be -3 upon 2. Now for the second factor, if 3x minus 1 is equal to 0, then x will be 1 upon 3. That means now you have two solutions. X equal to -3 upon 2 and x equal to 1 upon 3 are both solutions of the given equation. Is it clear? That means you have solved the quadratic equation. ये quadratic equation ये था, इसको अपने, इसको क्वेश्चन क्या था, you had to solve. Solve का क्या मीनिंग होता है, you have to find value of the variable x. And what did we do? We first used the splitting method, then we found the factors, उन factors को we equated to 0, and then factors का meaning ये, they will be multiplying each other, so we get two solutions because there are two factors. If this is 0, then the solution is -3 upon 2. If this is 0, then solution is 1 upon 3. That means for this equation we have two solutions. Okay. अब let us see another example. For example, ये, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इसको भी आप split, you can use splitting method in this. This is also a quadratic equation. Now let me write here
let me write on the right side. इसको मिटाता हूँ मैं. Now I have equation x square plus 2x plus 1 equal to 0. If I use the splitting method क्या कहता है? जो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax square plus bx plus c is equal to 0. What do? I multiply a and c and then find factors of a and c, so that when I add these two factors I should get the middle term. This is my splitting method. So अब मैं क्या कर सकता हूं? A and C. A is 1, multiplied by 1. So AC is 1 और 1 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 multiplied by 1. On addition, can I get the middle term? Yes. 1 plus 1 is 2. That means I can split the middle term. I can write this as x square. 2x को I can split. I can write x plus x. 1 plus 1. और ये जो c है इसको वैसे का वैसे ही रखा. फिर इन दो में से मैंने कॉमन फैक्टर निकाला x. अंदर बच गया x plus 1. इन दो में से कॉमन फैक्टर निकाला प्लस 1. नहीं आ तो रही है आवाज. हेलो. वेट. Let me see the setting. Speaker. Hello. Microphone. Hello. Is it clear? Yes, sir. Yes. Okay. So, what I can do from this x plus 1, these two, I can keep plus 1 as common factor, and inside the bracket I'll get x plus 1. अब इन इसमें से x plus 1 I'll get common और बाकी क्या बच गया? x plus 1. So ये जो इक्वेशन था इसके फैक्टर्स मेरे को ये मिल गए, x plus 1 multiplied by x plus 1. So this is using splitting method. But at the same time अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, if you have practiced your algebraic identities, वहां से भी आपको एक हिंट मिलेगा. You will get to know, अरे ये जो हमारा इक्वेशन है, this is using which identity? A plus B whole square is equal to A square plus 2AB plus B square. इसमें A square, now यहाँ पे ध्यान से देखो. So this is your A. So मैंने x को स्क्वायर कर दिया. So my x is A. B is 1. So this is 1 square. And this is my 2AB, 2 multiplied by A multiplied by B. So this satisfies my, I am using this algebraic identity. और मेरे को मालूम है कि ये जो फॉर्म है, now this is my polynomial. This polynomial is equal to this,
and this can be written as a plus b multiplied by a plus b. So in a way मैंने क्या किया, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल दिए. So that means अगर मैं using this algebraic identity I can write this polynomial as x plus 1 whole square. Now x plus 1 whole square is equal to 0, therefore x plus 1 is equal to 0, and therefore x is equal to negative 1. That means for this quadratic equation there is only one solution, x is equal to negative 1. Now see both the examples. In this quadratic equation we have only one equation, one solution, which is x equal to negative 1. So there is only one solution. लेकिन इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था, ये वाला, this had two solutions, 1 upon 3 and negative 3 upon 2. ठीक है? So quadratic equation can have one solution, it can have two solutions. So this method is by using the factor method. अब फैक्टर मेथड के लिए आपने फैक्टर थ्योरम भी सीखा है, which was again using the zero of polynomial. So basically जो भी हम सीख रहे हैं उसको हम अप्लाई कर रहे हैं. पहले हमने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल सीखा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल से हमने फैक्टर थ्योरम सीखा, फैक्टर थ्योरम से हमने उसके अभी जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज कर लिया कि हमने जो फैक्टर्स निकाले, जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने ये दो फैक्टर्स निकाले और जब इनको हमने जीरो बना दिया तो हमें दो सॉल्यूशन मिल गए. So this is how we are, whatever we are learning, we are applying to solve different problems, algebraic problems. So this was about factor, using the factor method. उसके बाद नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एक आपको याद ही रखना पड़ेगा, बट ये डिराइव कैसे होता है वो आप देख सकते हो. जो हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. सो व्हाट वी वांट टू डू कि ये जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, a. When I write a x square and if I ask what is the coefficient of x square, will be a, because a is a constant number. इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वी वांट टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर. टू मेक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर ए परफेक्ट स्क्वायर, what do we do? Multiply both sides by 4a. अब मैंने इस पूरे को 4a से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 4a से, राइट साइड को भी 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. राइट साइड से तो जीरो ही आएगा, जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, आई विल गेट 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म 4abx, then next term 4ac. So I'll get this equation now by multiplying both sides by 4a. अब मैं इसको अगर देखूंगा, now I can observe कि ये टर्म जो है, this is basically 2ax का होल स्क्वायर. ये जो है
4abx. 4abx is 2a multiplied by b. So I'm wanting to use this formula, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला को मैं यूज करना चाहता हूं. तो इसको यूज करने के लिए क्या कर रहा हूं मैं, एक नेक्स्ट स्टेप में हमने लिख दिया एड बी स्क्वायर. अब यहां पहले हमने लिखा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4a, वी गॉट दिस इक्वेशन. ओके, फिर हमने किया कि वी ऑब्जर्व्ड कि ये वाला फर्स्ट टर्म तो होल स्क्वायर बन गया, सेकेंड टर्म 2ab बन गया, तो बी स्क्वायर तो है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं बी स्क्वायर. बट ध्यान ये रखना है, वी हैव टू वट एवर वी हैव टू डू बोथ द साइड्स. जैसे यहां पे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने बोथ द साइड्स, इसको भी 4a से मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट साइड को भी 4a से मल्टीप्लाई किया. नाउ आई एम एडिंग बी स्क्वायर बोथ द साइड्स. सो व्हाट विल आई गेट, 2ax का होल स्क्वायर प्लस ये प्लस बी स्क्वायर. ये 4ac तो वैसे का वैसे ही लिखा, और राइट साइड में बी स्क्वायर बन गया. सो ये दिस शोज मी दैट आई कैन यूज दिस आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर. तो मैंने क्या नेक्स्ट हमने क्या किया, जो ये प्लस 4ac है इसको ट्रांसपोज किया. ये सो दिस बिकम्स माइनस 4ac होना चाहिए. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0. यहाँ पे माइनस होना चाहिए. बी स्क्वायर, अब इसको जब मैं ट्रांसपोज करूंगा दिस विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac. इसको ठीक कर लेते हैं. एंड ये जो आइडेंटिटी है ये क्या हो जाएगा, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर. बी स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए. लेट मी चेक. तो यहां पे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी गलती की हमने. दिस शुड बी पॉजिटिव 4ac को जब मैं यहां लाऊंगा दिस विल बी माइनस 4ac. सो आई rectify it, I'll keep it, this should be b square minus 4ac, b square minus 4ac. और लेफ्ट साइड में क्या है मेरा, लेफ्ट साइड में this is my algebraic identity which is a square a plus b का whole square. Now my a क्या है, a is 2ax and b is b. So इस आइडेंटिटी के बदले आई हैव रिटन 2ax प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर रूट करूंगा. आई हैव टू फाइंड बेसिकली वैल्यू ऑफ x. so this will be, let me rub it.
ये इस पेन से लिखा है। ठीक है, देखा, ध्यान से मैंने भी नहीं देखा और ये गलती हो गई। फिर से करते हैं। सो बी स्क्वायर, इसको यहां लाया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरी की पूरी आइडेंटिटी क्या मिली हमारे को, 2ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देयरफॉर नेक्स्ट ऑपरेशन क्या किया हमने, स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। सो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, वी गेट लेफ्ट साइड में 2ax प्लस बी, और यहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट। Now this can be both positive and negative, because suppose if I have 25, 25 का square root क्या है, that can be plus 5, it can be minus 5, because minus 5 into minus 5 is positive 25. Therefore इसका square root will be plus or minus. Now so 2ax plus b, अब b को भी यहां लाएंगे हम, so ये हो जाएगा नेगेटिव b, और x क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2a। इस इक्वेशन को व्हेन यू सॉल्व इट, योर x विल बी माइनस b प्लस माइनस square root of b square minus 4ac divided by 2a. So this is your quadratic formula. This you have to remember. This is your quadratic formula for solving quadratic equation in a standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था